I cordially invite our today's guest, Dr. Ray V. Kumar sir, our principal, Dr. Manjunath N.S. sir, and all the respected teachers present over here. Now, I kindly request our guest to come on the stage for lamp lighting ceremony. दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते. धन्वंतरी वंदना. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपाद्यपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चम्योमवातामनिवारिवहिनी पंच प्रपंचात्मक देह भाजम संताप संपात जराज्वरांतम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीन नीलामुदकान्तिकान्तं शान्तं हरैर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमिनोर्यतानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्. I request Principal Sir to kindly felicitate our guest with memento. Now, I request Mini Ma'am to kindly come on the stage to tell us more about our guest speaker. Good afternoon, one and all. Good afternoon, respected principals. Our guest, Dr. Ray Vasant Kumar sir, as an epidemiologist from abroad, as from USA, and my madam. Here, we want to introduce her, but I don't think we can finish this introduction within 5 or 10 minutes.
because sir is from the USA to India and from India to USA, have a very good knowledge about the epidemiology, what is happening behind all these communicable diseases. So we want to say that according to the profession, sir as a public health primary health care specialist, assistant professor teaching experience in the MPH program, emerging infectious diseases, and moreover we can say the state health department as a district epidemiologist and WHO consultant. We know we have a good guest like this from the WHO and in the Geneva and the UNICEF. Sir already worked along with all these people and give so many prizes and welcome all in every part of India. We know that International Medical Corps COSAWA, EPI coordinator, worked as public health advisor, consultant Nepal, medical officer and epidemiologist NGO, a clinical camp in India. Senior medical officer worked for Image Hospital and Rajiv Gandhi Mobile Clinic for rural India. Physician worked for Noble Human Welfare for sick and needy and organizing and the city limits Andhra Pradesh, India. Sir, the qualification as an epidemiologist, Masters in Public Health, MPH University School of Public Health, Birmingham, Atlanta, USA. In 1996, took some MPH courses at the MRA School of Public Health, Atlanta, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery in 1985 from Gandhi Medical College, Bhopal, and Bachelor of Science as a BS University of Jabalpur, India. With all these, the scholarships from the medical school scholarship awarded by Government of India, but go to abroad and do all away the duties to the USA government. Now, studies with us, and I like to have some emerging students as us from this beginners. So I want to give so many important things related with the epidemiology or the communicable diseases which is prevalent. So I got so many scholarships as well as awards from the USA government, Washington, from the White House. All these are so many. Hope USA, that's a very big project. What is going on from the America to the Indian level. So all these, we have a very important and a very eminent speaker and a guest today. So I welcome sir and I ask sir to be here with, and give our students some words. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Minis, and Honorable Principal of the Ayurvedic Medical College, and you're all welcome, juniors, and the other teachers and the staff of the whole Ayurvedic College. We are most welcome here to this institution. You're very lucky to get admission in this medical college, and it is a God's plan. To get a white coat, 1 in 1 million, you get a coat for the people in any part of the world. To be a doctor is a very, very honorable sort of thing. And especially now Ayurvedic, you guys got followed to be greatest achievement. And my subject, which is related to you, why and how I'm here, the reason epidemiology is a vast program, counts from the tropical diseases to the outbreak diseases, infectious diseases, you name it, tons and tons. And why I choose that subject, not for the money. There's no money in that department. And most of the people practice and make millions in USA, but I went through humanitarian basis. So I chosen this subject and traveled all over the world, in fact. And all over the world, and luckily God has blessed me so much that wherever I go, I get the awards on my things, you know. And so what I mean at future is you're the generation coming up to this institution, and it's a beautiful medical college. And don't miss this opportunity. Study hard and get your degree back, and go to the rural areas, especially. In our country, doctors are needed very badly, in this country especially. And it is better that don't go towards the city level, go to the rural level, serve the people. Humanitarian, badi ashirwad hoti hai, badi blessing hoti hai. I'll speak both the language, okay? I got a command in many languages. I traveled, I learned it, and I made it. But American tone nahi aa paegi, because when you go very young kid, you learn the American tone. But still, I'm an Indian. I'll be an Indian forever.
and I never forgot our culture. That's what I'm here after 30 years, back to this nation. I want to serve for the young generation like you, go to the camps and help you all up in rural area, which will be very, very much important, what I used to do in my life career in India, as well as in USA. So I traveled 21 countries, in fact. Epidemiology is a wonderful program, and many countries where I went, I achieved, I dedicated. एक example बतलाता हूँ कि when eradication of polio, how many people know about polio? Polio जानते हो क्या बोल polio? You all know it. So when eradication program took place, so we've been selected through the WHO and CDC, and I was the eighth among them. And sorry, thanks. I was the last person to get it. Eighth person, remaining all Americans. I'm the only Indian there. So we have been posted in Bangladesh. Bangladesh, Kunjipur, what do you call Assam ke barsat aati na? All goes water towards their country. So then that turns into Yamuna Nadi, they call it. And people live in a small ponds, choti ponds mein rehte hain, and why they have to do everything for themselves. And to go to that place, it's not an easy job, and very humid. It's worse than this humid. यहाँ के weather such बहुत ज़्यादा ही humid होती है. So local doctor देते हैं, Bengali doctor, and then they'll give a driver. And they'll अपने life के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, but अपन कुछ करने चाहिए ना. That's the most important thing. And most of the Americans, they are a little lazy, I tell you the frankly. And like me, I go extreme on things. So वहाँ humidity हो रही है, then driver said एक बच्ची बच गई polio drops. And that was my term in my district area. And then when driver said साहब यहाँ से आपकी गाड़ी नहीं जा सकेगी, the only thing you have to do, take a boat. And boat says, so the doctor will say, sir, I'll go and show you up. And so then we went 2 miles on the boat. Once we went there, and गांव एक ही गांव है, where one small child, वो miss नहीं करने के लिए मेरी आशा हो रही थी. And then when I went there, the जो farmer है, और coconut water के coconut लाके पहले पिलाया, भाई आई, and then he took around there. Once I went, the babies were gone to the aunt's place, एक और पहाड़ है, where I was sweating like this only. What now? I'm sweating more than that. And तो वो जो है at last 2 miles जाना, तो 2 miles last boat में जो है हम लोग by शाम तक we given a vaccinated drops दिए उसके vaccination graft. And तो इतना आनंद आ रहा था कि I felt like the last child सेव करने में, तो whoever eradicates the program on the last program होती है, and then your name is listed with your photograph in Geneva में. World Health Organization is for us is like Mecca, we call it. So it's Geneva में World Health Organization है. And so there, मेरी photograph with 8 members हम लोग गए थे. We are all together. We have been listed there. Eradicate करने. देखो कितना अच्छा लगता है, क्यों पैसे important नहीं है. Your serving is important, right? And your name is listed in such and thing. कितना अच्छा लगता है, आनंद आता. And money, we can earn it. Money comes automatically. But your serving is most important for your young generation, very especially boys, most important to you also. And hard work करके, and then enroll into PSM program, preventive social program, or social medicine, what you call it. And उसमें involve हो, time हो, rural area जाओ, एक team of friends बना के, and जाके सेवा करो वहाँ, then come back, see their diagnosis, सब कुछ. हम लोग जाएंगे एक दिन, मैं तब तक रुकूंगा, और I want to take you all there and see my way of training, and then that'll keep up for your lifelong यादाश्त आएगी. Then so फिर उसके बाद जो वो खत्म नहीं हुआ, then epidemiology program ऐसा vast है कि after eradicating that program, I went to क्या बोलते हैं
Kosovo, आप तो सुने ही नहीं होंगे, आप तो बच्चे हैं. The war, Yugoslavia war हो रही थी, and I was selected to go there. Out of 4 people, I was one of them. I became an EPI coordinator. EPI coordinator of vaccines, and that country is known as Eastern Europe में थी, Eastern Europe में, and that Eastern Europe में they started vaccinating in that country. War एक जगह चल रही है, and then we were all working hard on that. So my driver said, "Sir, if you go there, the Russians will shoot you." And so I said, "We'll put an international medical corps कि जो भी है हमारे, we put agenda on that." I said, "They can't stop us. Let's go." तो मैं इतना risk और adventurous life लिया, and then I went and vaccinated in that last 4 बच्चे हुए थे, and that गांव वाले इतना खुश हो के वहाँ के special lunch होती वहाँ के, it's like a pizza, but it's very wonderful, quality one. मैंने कभी नहीं खाई थी life में, तो they treated us such a way, and वही award होती है, what you give it to them, and their smile face होती है, so much of happiness आती है, तो लोग को कितना आनंद आता ना. That's it. So this is our sort of a services in our medical field. This is the time which you all have to work hard. Work hard at PSM is a very, very important subject. That's the most important. All around, you come back, clinic. Clinic here होगा. Clinic is wonderful. Then a prevention start हो जाएगा. See, all the way going there, you're not running towards the medicines. So prevention is the most important thing in your life career. So prevention के लिए एक ही तरीका है. Whatever madam help करेगी, तो you all go around with her, and that will be the greatest thing to learn and find things. And second thing is that when I came back from there, USA में, we had, and in USA में, I was an epidemiologist, district epidemiologist कहते हैं. District के 13 county होती है. It's not 1 or 2, it's 13. And then it's not easy to drive your car. It's miles very good. And so I was posted as a district epidemiologist. इतना बड़ी position थी मेरी. And so my outbreak निकली थी, hepatitis A. Hepatitis A, you're still knowledge gain करना अच्छी बात है, but you're shaking of head, you know I have a knowledge. It is a good idea. That's about it. So that's hepatitis A जो होती है, and hepatitis C भी होती है ना? So hepatitis C is not a good subject. It's like through the needles, and other subjects से होती है, drugs की वजह से हो जाती. तो hepatitis A जो contamination of fecal भी हो सकती है. Their chances are. तो ये हमारे fast food बहुत होती है वहाँ, and the people going around in हाथ वगैरह नहीं धोते हैं कभी-कभी, these people after they're going to the bathroom, so they just serve the food just like that. तो हो गया. फिर गांव में पूरी सी टाउन में they started, and I went brushing up, prevention करने start किया था. Then पता लगा कि prison, मेरी ड्यूटी थी prison house जाना था, जेल. जेल में ये hepatitis C common होती. They're all HIV, hepatitis C both common. तो hepatitis C common है, तो वहाँ nurse को training करना पड़ता. As epidemiologist इतनी करनी पड़ती है, and doctor होता, doctor को भी train करते हैं हम लोग. That's something, क्योंकि मैं कोई कमी नहीं है उनसे. That's something we have right to do that. That's something. State health department कहते हैं, and state health department support करती है हम लोग, because powerful job है. And then when medical records and CDC कौन सुना है? कितने लोग CDC के बारे में सुने हैं? CDC, Center Disease Control. ये याद रखो और लिख लो, Center Disease Control. जैसे A.M.S अपने इंडिया में होता है, but this is the control करती पूरी वायरस को. इनके labs होती, पूरी labs होती, इनके lab centers. वायरस पूरे अपने वर्ल्ड के वायरस वहाँ लैब में है, क्योंकि कल कुछ हुआ तो टेस्ट कर सकें. तो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सीरीज. ये मेरे घर से 4-5 माइल में थी, अभी तो नहीं है, मैं तो यहाँ मूव हो रहा हूँ इंडिया, आप लोग सेवा में. एंड सो CDC के पास जो है, देन दे कंट्रोल विद द WHO भी साथ देती है सेंटर डिजीज कंट्रोल से. Center Disease Control से साथ देती है हमेशा. तो that's what we are alert about this. तो क्या हुआ,
when CDC स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, हम लोग स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, तो ये हम लोगों से करस्पॉन्ड करती, कोई भी रिकॉर्ड्स निकलती है इसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स जो भी है, वी हैव राइट टू गेट कलेक्शन फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लेके वो सीडीसी पूरा रिकॉर्डिंग करती है, इस एरिया में हेपेटाइटिस आउट हुआ, आउटब्रेक हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. So these are the structural plan of prevention of medicine. PSM में आती है. If you start knowledge अभी से ओपन कर लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ओपन करने से ना नॉलेज लो. आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आई, आप जब हमारा तो बुढ़ापन आ गई, तो we don't have that technology those days, and nowadays we are not using it all much. The digital and everything has come in. So open करो पढ़ो, उसमें से कब टाइम हो तो. Then whenever you have time, vacation or घर, so try to just start reading like a journal. जैसे मैगजीन पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ा करो, तो इससे बहुत नॉलेज गेन करोगे. दैट्स वन थिंग. तो ये, एंड सेकंड थिंग इज दैट टाइम हो तो बतला देना सर, क्योंकि ये लोग सुबह से बैठे. दैट्स इट. बट दैट्स द मेन थिंग. माय वॉइस ठीक आ रही है? ठीक है, कभी आ रही कभी जा रही. दैट्स इट. कैन यू हियर? कैन यू हियर? कम ऑन अप. नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं आपको सुने आ रही ना आप लोग. ठीक है, दैट्स अमेजिंग. या नहीं आ रहा? अरे बाप रे. तो ठीक है, आई विल टेक दैट, नो प्रॉब्लम. अभी आ रही है, मैं यूएसए से आया हूँ अभी तक. Anyway, the thing is that it's a very interesting subject, prevention of medicine. जो भी इसमें फ्यूचर एमडी के प्लान हो या ना हो, या उसी में राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अभी से प्रैक्टिस करने लगोगे तो बहुत फायदा. एक एग्जांपल और दिखाऊंगा मैं, ये सब्जेक्ट क्यों मैंने चूज किया. मेरी जो पीएसएम के प्रोफेसर थी भोपाल मेडिकल कॉलेज, भोपाल में मैंने ग्रेजुएट की थी उस जमाने में एमबीबीएस. तो मेरी जो टीचर थी हार्वर्ड से, जैसे मैंने एमपीएच किए वो करके आई थी वहां से, तो शी हैड सच ए नॉलेज. और भोपाल में जो है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट लेप्रेसी, किसको जानते हैं, कितने लोग जानते हैं लेप्रेसी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. लेप्रेसी. तो उस जमाने में ये साउथ इंडिया से, मद्रास से टन्स ऑफ पीपल आने लगे भोपाल. रेलवे स्टेशन के पास स्लम बना है, एंड दे आर ऑल स्लम बना के घर बनाए. एंड वन थिंग, कंटेमिनेशन नहीं होता, ये बच्चा पैदा हुआ, and father mother they look leprosy, but ये contamination नहीं होता है. तो मेरी जो टीचर सेलेक्ट की थी, 3 लड़कियां 2 लड़कों को, मैं था उनमें. तो पहली बार हम लोग क्लिनिक ले गई. she took us to the भोपाल स्लम एरिया के पास ही क्लिनिक, and she is a real Anglo and tough woman थी. वो मदर टेरेसा थी हमारे भोपाल की. and that's my thing. You know मदर टेरेसा कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड, सब जानते हैं. दैट्स गुड थिंग. एंड उसके भी बतलाता हूँ मदर टेरेसा के बारे. एंड ये जो डॉक्टर क्लॉडिया, शी वाज कहने लगी, हाथ में ग्लव्स नहीं है, कुछ नहीं पहनती है, एंड कहने लगी कम ऑन अप. क्लिनिक ले गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस पेशेंट को डाली. जिधर भी लेप्रेसी पेशेंट्स को देखा ना हाथ में, कभी देखा हाथ पैर में बिल्कुल वो ये रहता है, वहाँ क्या निकलता, पफ निकलता, बिल्कुल मिल्क जैसे या सोडा जैसा निकलता. एंड दैट वन इफ यू सी इट यू फेंट. तो 2 लड़कियां साथ थी, वो ऑटोमेटिक फेंट हो गई. तो वो आई भी ने फिर ये, तो ये बुलाती है कम ऑन अप एंड पुट योर हैंड हियर एंड देन स्टार्ट क्लीनिंग. वो हाथ से ही कर देती है सब कुछ. एंड आई डिड नॉट हेजिटेट, मैं इन्वॉल्व हो गया. तब से मुझे मन में आया कि ये इट्स सो डेडिकेटेड जॉब and it's a beautiful thing. कितना आत्मा को शांत मिलता है सबके लिए. That's very important. That's what she says. And बोलने की बात है, सुने आ रही ना आप लोगों को? ठीक है, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर. आप सुने आ रही? ठीक है, whatever it is. So since that we had a major tragedy. You are not born. 84 में कौन born हुए? And that yeah. आप लोग born ही नहीं होंगे. 84 में December 4th था,
And our medical college, बहुत सुंदर medical college in Madhya Pradesh, in the top of the hill, where is actress के बारे में सुने हैं ना, शर्मिला ठाकुर, या देखो उसके बारे में हाँ कहते हैं. तो वो जो नवाब पटोड़ी के फैमिली से शादी की, so their property में हमारा कैंपस था. हम लोग on the top of the hill पढ़ते, यूनियन कार्बेट अभी जो दिख रहा है यार सेम है. And I think so. And वो जो है नीचे था, about 2 miles away, 3 miles away. उस दिन नाइट का ट्रेजिक हो गया कि बरसात है, ट्रिपल ऑफ वाटर भी चले जाए ओपनिंग में. मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड जानते हो ना क्या होती है, कितनी डेंजरस होती है. एंड दैट वो जो है विंटर था, गैस मिल गया, इट स्टार्ट स्मोकिंग अप, स्मोक जैसा आती है ना विंटर में. तो वो माइल्स धीरे धीरे आने लगी. तो जितने भी ये लेप्रेसी लोग थे क्लिनिक के, 2000 पॉपुलेशन थी, पूरा खत्म हो. इट्स गुड. मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि एटलीस्ट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग शुड गो अवे, बट अदरवाइज अदर पीपल आल्सो डाइड. अबाउट 5-6,000 पीपल की डेथ हुई उसमें. तो हम लोग इतना डेडिकेट हो गए, उस समय की बात है. इवन भी थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में थे, एंड वी डोंट नो व्हाट इज एनीथिंग करना था. तो डॉक्टर, एक फिजिशियन हम लोग साथ रहता, हम लोग जाके तो ट्रीटमेंट करते थे. आफ्टर मैथ बहुत केसेस हुए. अभी भी भोपाल में प्रीमेच्योर बेबीज का प्रॉब्लम है, वो है, ये है. एंड बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द केसेस हम लोग लाइफ कैसे गुजारी, बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट. ये जो एपी जो है, ये तो 10 साल पहले मिली है. उससे पहले प्रिवेंटिव था ऑलरेडी मेरे माइंड में, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन. सो आई वाज एंजॉयिंग इट, यू नो. एंड and second thing is that I was married to an American for 21 years. Sorry to bring it up because I have to bring it up. And she never followed allopathic. She hates allopathic like me. Uh, Ayurvedic, we used to start up for many things. And जो भी एलोपैथिक लिखना, तो अभी भी माल प्रैक्टिसिंग इन यूएसए इज वेरी कॉमन. वहां से जो डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी वो शुरू कर दिए धंधा. आई टेल यू धंधा इट इज. दैट्स वेरी बैड. But I don't want you all to do that. Kal future, Ayurvedic is such a beautiful subject and future of this country. And यूएस में अभी हल्दी खाते हैं हर जगह, कैप्सूल्स मिलती है आजकल. देखो अपने इंडिया की कितनी जा रही है, क्योंकि दे वांटेड टू बी एन आयुर्वेदिक. So that's the main thing. My wife passed away because of B cancer, because overdoses of DK. She's gone. Other, she was very young-looking lady, and she was very active. She's alternative medicines and vegetarian teas. And as I was vegetarian, so she also followed me up and everything. So the question I'm bringing up that topic, future allopathic will go down and Ayurvedic will rise. All of the world, all of the world. Now world is looking at us. India. India is the Ayurvedic subject for look career. And especially, and we are rising up. And we will rise within no time, I tell you. तो सब आपके हाथ में, आप लोगों के बच्चों के हाथ में. I can't say you're बच्चे अब तो. You're grown-up girls. But anyway, so your future is the brightest thing. And ये जो medical campus, you got admission, you're lucky. इतना अच्छा बढ़िया कैंपस है. I never seen. ये weather ठीक रहता तो मैं ठिकाना यहीं डालता. And that's a good thing. Weather is a major problem. But otherwise it's beautiful. यहाँ surrounding से आप लोग आए तो ये तो common है आप लोगों को, है ना. And I never seen this weather. मैं दुबई गया था, दुबई में पानी बाहर रखो तो चाय बना सकते हो. So when I came here, I felt the same thing. I can keep water. So that's one thing. Anyway, so any questions, any कुछ पूछना है, don't hesitate to talk to me. And especially boys are quiet like girls. You all should talk something. Yeah. Anyway, and any questions? अभी बहुत है मेरे experience and घंटे लग जाएंगे और थके रहोगे. That's it. Yeah, go ahead. क्या बोल रहे हैं? Scope after B.A.M.S. Yes, epidemiology in the US. B.A.M.S के बाद? Yes. अच्छा, they getting it? Really?
नहीं He is asking. नहीं BMS का तो भूल जाओ, वहाँ तो आपको वीजा भी नहीं देंगे. Don't apply because they hate our subject. Ayurvedic they don't like to. Allopathy खत्म हो जाएगी ना वहाँ. तो वही तो business है वहाँ allopathy का. तो आयुर्वेदिक का सीक्रेट से निकलो, कोई लड़की से शादी करके निकलो. I'm just kidding. That's my thing. तो क्या है कि BMS का इतना ये नहीं है. एंड यू स्टार्ट योर ओन, कुछ भी करना है तो BMS वाले बहुत कम है, मैंने कहीं देखा नहीं बिल्कुल. दैट्स राइट. बट ये छोटे मोटे लोग जाते हैं ना आयुर्वेदिक फॉलो, दे आर ऑल डूइंग दैट. दे आर कमिंग अप एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ आयुर्वेदिक. Patanjali, we got a store there. Yes. You don't want to go to India. Yeah, you shouldn't leave India. India छोड़ के कहाँ जा रहे हो? Yeah, अमेरिका लगी है लाइफ में. अमेरिका में कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगी. इट्स नॉट ए जोक. इट्स नॉट ए जोक. हम लोग जब गए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है, 3 साल. फिर हमारे बोर्ड्स पास हुए एंड करने के बाद भी रेजिडेंसी इजी नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. दैट्स व्हाई. एंड हाँ क्या बोल रहे हैं? स्टडी वांट स्टडी. तो स्टडी कौन सी सब्जेक्ट करोगे? एपिडेमियोलॉजी करना. ओ या यू कैन डू दैट. तो एक काम करो, कल से ही ये छोड़ के फिर वो टेस्ट लेना पड़ेगा. टेस्ट पास करना ही नॉट ए जोक. तो कर लो, वो करने के बाद आप मेरे से कभी कांटेक्ट करो तो मैं रेकमेंड करूँगा. यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ कॉन्सेंट्रेट. लगता है आपके माँ बाप बहुत वेल्थी पीपल है, यहाँ मेहनत करो. दैट्स वन थिंग. सो स्टे हियर एंड डेवलप हियर. एंड जब भी मौका मिला मैडम से मेरा नंबर लेना और कॉल करना, मैं हेल्प करूँगा. मैं हिंदुस्तान में रहूँगा जब तक. That's I'll advise you that. Any other question? Any other question? यार शर्मा मत, ब्रेन लगाओ और क्वेश्चन पूछो, बहुत फायदा होगा. And that's one thing. But anyway, they are not interested. Any ladies? Any girls you want to ask any questions? Yeah. Yeah. Yeah, you're not. Okay. Okay, कोई बात नहीं, कोई बात. Yeah, don't feel straight. ये speaker लेना. ठीक है. So I would know like more about your experiences that you had in US. Okay. In the US. They're very good. I'll tell you that. That's no problem. USA is such a place. Some cities are very beautiful, and it's known as from USA to where I live in Atlanta. From Atlanta to the place what I'm talking is the वो कौन सी है? It's Tennessee के पास है. It's one of the poorest state. बिहार poor है ना? वैसे ही बिल्कुल है वहाँ. वहाँ blacks are plenty, minorities कहते हैं. They live in, कभी कभी उनके पास lights भी नहीं. अपन समझते हैं अमेरिका बहुत wealthy है, they are more poor भी है. अभी कनाडा के बारे में आप लोग सब सुना होगा. Example, it's similar little bit, but हम लोग बतलाते नहीं क्योंकि हमारे पास मकान है, गाड़ी है. That's one thing. And so, okay. Anyway, my experience. We went through the epidemiology to survive like झोपड़ी पट्टी तो नहीं, but they are all good houses. Government provides us their houses, and वहाँ जाके उनके immunization and ये सब government take over करती है. And उसमें जो any outbreak हो तो हम epidemiologist को बुलाते हैं. Then we work on that. Then data collection करते हैं. Then data collection करने के बाद then analyze करते हैं. फिर प्रिवेंशन करने के लिए. तो अभी क्या है कि एग्जाम्पल कोरोना हुआ था. तो कोरोना एवरीथिंग इज नॉट कोरोना. बाइडन खांसी आए, कोरोना लगा दिया, सब कुछ कर. देयर इज नो सच थिंग्स. दैट वाज एंड एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इट. दैट इज एंड ऑफ कोरोना. व्हाट इज ट्रेजिक हुई. एंड they would have saved a lot of patients, but the respiratory burner जो चलाए थे, they all just उनको experience नहीं है. They put it up. Simple oxygen and antibiotics से cure हो सकती.
but they didn't know anything at all. And that's what we lost so many patients in USA. And the second thing is that outbreaks are not common there. Foodborne diseases are very common. अच्छा आइडिया दिलाया आपने। तो foodborne outbreaks क्रिसमस आती है ना, क्रिसमस की ये लोगों का फेवरेट फूड है बीफ एंड ये क्या बोलते हैं पोर्क। It's very favorite. Everywhere you go, they serve you that and big cake pastries खिलाते बहुत खाते हैं लोग होता हूँ जैसे आपने इंडियंस ने कहा and that is the कभी कभी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो रेस्टोरेंट फूड पॉइजनिंग लेके आती। तो 1 दिसंबर में मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मेरे को they were giving CR40 for about 4-5 days उसके लिए उनका भी क्रिसमस ईव कहते हैं तो वो बनाते हैं पार्टी घर। So that time the call you have to go about 20 miles away. 20 miles से यहाँ तो 40 kilometer distance. So that's nothing for me. So जब गए वहाँ, there were already 22 patients. They're all having vomiting and diarrhea and everything. क्योंकि food poisoning हो चुका because of the meat, cold meat. मैंने diagnose कर लिया तो उसका fridge ठंडा नहीं था, तो उसको बंद करवाना पड़ा। बट वहाँ जो गवर्नमेंट है बंद करने नहीं देती, बट मैंने बंद किया बड़ी जबरदस्ती। आई डोंट केयर सर। तो करवाने के बाद जो भी 22 पेशेंट्स थे एडमिट किया हॉस्पिटल में एंड हॉस्पिटल करने के बाद दे रिकवर हो गए थे। एंड सो दिस इज द एपिडेमियोलॉजी एनालाइज इन द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट यू डू देयर। और बहुत ही कम आउटब्रेक्स होती तो they'll invite us. That's amazing. Copy, I hate writing papers and the papers presenting into the state government. ये लोग मस्ती करते हैं, so research वाले को मजा आता। But I used to write obesity ये सब। वहाँ obesity मैंने बंद करवाई थी some schools में, 13th county में। Some of the schools where Coca-Cola होती है, ये तो हर बच्चे के घरों में से $2 $3 पेरेंट्स देते एवरी डे। तो एक कोको कोला पानी जैसे पीता है, फिर दिन भर में वो स्कूल छोड़ने से पहले ये लीव होम कितना हो गया, 4 हो गए ना, 4 into 50 grams ईच कितना 200 grams शुगर। सो डोंट यू थिंक दैट उसको डायबिटीज नहीं आएगा? तो डेफिनेटली डायबिटीज होती है। एंड देन इसको कंट्रोल करवाया था कंप्लीटली। आई सेड स्टॉप दिस वैन द कैंस हियर। तो पानी का बॉटल्स उसमें चढ़ाया। तो एक स्कूल नहीं 10 स्कूल मेरे वजह से हुआ था। इट वॉज वेरी कंफर्म क्योंकि मेरे बैकग्राउंड दोनों थी MD एंड वहाँ MD कहते हैं मोस्टली, MD MPH दैट इज एपिडेमियोलॉजी। तो डॉक्टर है प्लस एपिडेमियोलॉजी है तो डर जाते हैं स्कूल्स। तो दैट्स व्हाट दे गिव अ प्रिविलेज एंड माय टफ था बिल्कुल। दैट्स अमेजिंग। तो वो यही कहते हैं ये इंडियन आ रहा है। So that's what I used to go and protect it. So any other questions you want to talk? Anybody? ठीक है। Anybody? Oh yeah, go ahead. Yeah, you can come as a visitor anytime. Yeah. Why are you dreaming about that? First dream about your first year now. That's most important. So उसके बाद correspond करो. I'll tell you when time comes, okay? Until unless I'm here, you can call me up and talk to me. That'll be a good idea. It's visiting you can go, but आजकल जो president is not doing good things there. I don't think so. You'll even get a visitor visa. And be careful. Don't rush up and go there. एक बार visa cancel हो गया, then you'll be in a troubles. So you'll never get for another 5 years, 6 years. So don't go. किसी मत सुना करो. That's another. Any of the social boys? No. ठीक है. That's another. Okay. I'll end this speech of mine, whether it is utilized for you all or not, but God bless you and wish you all the good luck for all your education program. Study hard, and that's all in your hands. The best thing is library, and beyond, that's the best thing. And शाम को बड़े घूमने के लिए मजेदार campus है, and then you can enjoy you also. So we also, boys have to work hard too. It's not for them only. That's my thing. Okay, good luck, and God bless you all. Namaste. Thank you very much, sir, for sharing your experiences. So,
the main purpose of today's lecture, sir's lecture, was to motivate you to serve people who need you, right? So many of you asked questions, हम लोग जा सकते हैं क्या US, ठीक है, that is वो एक curiosity आ जाती है, but जो main purpose था सर का बताना वो ये था कि after becoming a doctor you need to serve the people first, right? Sir has gone to many extreme in many extreme conditions. He has visited many places and served the people, like in Assam. Sir went to Assam, he went to a war area. So डरना नहीं है ऐसी चीजों से कि हमारे सामने कोई ऐसा बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस आ गया तो हम सोसाइटी को सर्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी कोविड के टाइम पे भी आपने देखा है। So main thing was to motivate you to serve the humanity, serve the people who need you. Okay, thank you very much, sir, for motivating the students.